हैप्पीनेस मॉर्निंग वंस अगेन। ज़्यादा है मैं चाहूँगा कि हमारे हाथ में जो भी चीज़ें प्लीज़ कृपया करके नीचे रख दें, टेबल पर रखें और हाथ को ऐसे करें जरा प्लीज़, और ये दोनों हाथों को जोर से एक्टिवेशन पॉइंट होता है, एक्टिव हो जाते हैं। ओके, जैसे आपको पता है कि आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट ईगो मैनेजमेंट। मैं आज का दिन शुरू करना चाहूँगा एक स्टोरी के साथ में। बहुत पुरानी स्टोरी है कि एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव में बिजली वगैरह कुछ फैसिलिटी नहीं होती, बहुत साल पुरानी बात है। एक 12-15 साल का बच्चा शाम को 7-8 बजे अपने घर पे जाता है, देखता है कि उसकी माँ कुछ प्रकाश के लिए दिया जलाने के कुछ एफर्ट्स करे। लालटेन जो होता है ना, तो लालटेन साफ करते हुए, बाहर से साफ करके अंदर से साफ करते हुए जलाती है। जैसे ही साफ करने लगती है अंदर से, तो उसके हाथ को उसका एज लग जाता है किनारे ग्लास का और खून बहने लगता है। तो माँ क्या बोलते हैं कि जो भी फर्स्ट एड जो करना होता है करके फिर लालटेन जला के लगाती है। तो बच्चा पूछता है कि माँ अगर लालटेन लगाना है तो बाहर से अगर आप साफ करो तो चलेगा ना, आप अंदर से क्यों साफ करोगे? तो माँ का जो जवाब था वो ये था कि बेटा अगर उजाला अगर बाहर ज्यादा चाहिए तो अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। तो शायद कहीं ना कहीं हर एक इंसान में, हर एक ह्यूमन बीइंग में कुछ नेगेटिव क्वालिटीज कहेंगे या जो भी कहेंगे, उसमें एक फैक्टर है ईगो, जो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में इफेक्ट करता है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग भारी नुकसान भी सहन करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, एवरीथिंग। सो आज इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए ईगो मैनेजमेंट पे हमारे बीच में ज़्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर डोनिका बहन के ऊपर है। मैंने आपको सबको कम्युनिकेट किया है, शी इज़ हाईली क्वालिफाइड, शी इज़ एसोसिएटेड विद ब्रह्मा कुमारीज, और बहुत सारी अगर मैं आपको बताऊंगा तो इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा तो इट विल बी वन काइंड ऑफ ऐसे निबंध हो जाएगा। सो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए उनको यहाँ पे मंच पे बुलाना चाहूंगा, तो हम लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मिस्टर वाग ने कुछ ज़्यादा एलॉबरेट कर दिया। इट्स नथिंग लाइक दैट। First of all, a very good morning. Good morning. A more pleasant good morning. Good morning. A very beautiful good morning. Good morning. Okay. So today's session is for ego management. Right? Now, first of all, we have some pages in front of us. We will just go inside us. We will just introspect us. पहला वाला पेज छोड़ के सेकेंड वाले पेज पे हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें। First point I have to write, who am I? Who am I? You have to write the answer for what do you think, who are you? What do you think, who are you? You have to write just the answer for it. Second, after writing the answer for who am I, number second, what is my designation? Number third, what are my qualities? What time do you have to
कर दो वो चालू, आगे का दोस्त छोड़ के सब कर दो, बाकी सब चालू कर दो। हाँ ये जो छोटी छोटी वो चालू कर दो। थोड़ा स्ट्रेंथ जाएगा। Okay, finished. Now I would like to know the answers from you. Peter, first question का answer. I am a good human being called Anand Karanga. That's great. It's a very good and positive thought. Next. Now I would just give the ratings for it. Why I am asked. We have like thoughts in us, right? Our mind constantly gives thoughts, and we think for it, right? So the elevated thoughts, the positive thoughts. The third one is we can say ordinary thoughts. Fourth is we can say downgraded negative thoughts. So now you have given the answer. I am a Good human being called Anand Karanga. so you have got positive mark for it. That's good. I am a human. Okay. I am the soul. Ordinary thoughts, huh? I am the soul. Okay, that's also good positive. Now, I am the soul. It's again a fact, right? That's good. Ordinary thought. Again. Father, head of the family, CMD of the company. Right. I am a Pramod, human being trying to be a better and better day by day. That's great. Elevated thought. I have to be better and better every day. That's the thing where we begin, right? When I begin to think I am perfect with my qualities, then there I become stagnant. Just like the river, if it continuously flows on, then it never becomes stagnant. It's fresh, water remains fresh, right? If the river begins to think, I am having plenty of water with me, मेरे पास बहुत सारा पानी है और मुझे बहने की ज़रूरत नहीं है अभी, मैं रुक सकती हूँ। जिस दिन उसने ऐसा सोच लिया, रुक गई, तो क्या होगा? स्टैग्नेंसी आने लगेगी, राइट? अगर मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले मेरे मन को मैं ये प्रोग्राम कर दूँ, I have to be like a flowing river, राइट? मुझे एक बहते हुए पानी की तरह बहते रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है। Now coming to today's topic, what do you think ego is? आपको क्या लगता है ego क्या है? As per my knowledge, education gone out. Education. Gone out. That's very good. Because people think जितना जितना हम educated होते हैं, जितनी जितनी degrees का लेवल हमारे ऊपर लगने लगता है, उतना हम egoistic होते जाते हैं और जितनी knowledge बढ़ते जाती है, हम ये knowledge से परे हो जाते हैं कि हम egoistic हो रहे हैं. Getting? So what do you think else more? What is ego according to you? More proud than, मतलब प्राउड तो कह सकते हैं कि प्राउड इज ए गुड, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा प्राउड जो है सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स के सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स। That's ओके, also good, सुपेरिटी right? कॉम्प्लेक्स। Now, I have put something like this. Ego is attachment to the wrong image of myself or belief about myself. Right? What my image is, I have gone wrongly from it. Right? I can give an example for it. Just 2 days back also I had taken the same example when I was taking value for values session for the company HRs. If I have to write with this, can I write? No, you have to open the. Why? You have to open the deck cover. Again. Can I write? You have to make in the proper types. Still, can I write with this? अंदर refill नहीं ना? अंदर refill नहीं। हाँ, अच्छा। refill तो गिर गया नीचे। है ना? हम कभी भी लिखना होता है तो किसी से भी पेन मांगते हैं। We never ask for refill. हम बोलते हैं हमें refill चाहिए। हम क्या बोलते हैं? पेन चाहिए, पेन से लिखना है। We always think कि पेन से ही लिखा जाता है. We have never thought about the working principle कि refill है तो पेन लिखेगा, नहीं तो नहीं लिख पाएगा. सेम मेरे में ईगो क्यों आ रहा है? बिकॉज मैंने अपने ऊपर जो रॉन्ग इमेज लगा दिया है वो पेन का इमेज लगा दिया है.
मैं रिफिल हूँ, मुझ में ऐसा क्या वर्किंग प्रिंसिपल है जिससे मैं काम कर रही हूँ, उसके बारे में तो मैं सोच ही नहीं रही हूँ ना, नहीं? जब मैं डेविएट हो चुकी हूँ डायरेक्शन से ही कि अंदर का मुझे रिफिल वर्किंग प्रिंसिपल मेरा क्या है वही नहीं पता है, और मैं जो मेरे लिए फॉल्स इमेजेस बना रही हूँ, इम्प्रिंट्स बना रही हूँ कि आई एम अ डॉक्टर, I have completed my law, so I am also a lawyer. I have become a master's in it, and I am a sports person. अगर मैं अलग-अलग images मेरे ऊपर बना रही हूँ, तो मैं अपने ऊपर लेबलिंग करते जा रही हूँ, बट जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो तो कहीं और ही छूट गया। Getting it? That's the thing. आज हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हमारा रिफिल पार्ट कहाँ खो गया है। हम जो पेन पार्ट में अटक गए हैं और रिफिल पार्ट जो है वो कहाँ खो गया है, राइट? Next thing, what is ego? Now we can introspect ourselves with 3 points. That ego means the desire to get everything done as per our wish. जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, right? अगर वैसा नहीं होता है और मैं हर्ट होता हूँ, I am not able to judge कि ये तो शायद मुझे इनपुट और लेना चाहिए था दूसरों का कि ये सही होगा गलत होगा, परंतु मैं उसी पर स्टिक हूँ without taking others' opinion. I have stick to the decision. Whatever I am saying, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सही है, तो कहीं ना कहीं I am diverted to ego. It also represents a full body conscious stage. या फिर मैं simple language में कहूँ आपसे, तो जो पेन पार्ट है ना, पेन पार्ट जो है रिफिल को भूल गए और पेन को याद रखा, वैसे ही फुल बॉडी कॉन्शियस स्टेज। तो जो मैं बोल रही हूँ कि पेन पार्ट जो है वो मेरी बॉडी है, तो रिफिल पार्ट क्या है फिर मुझ में? That's also the question now. I think our Mind. own beliefs, our humanity. Mind. Good. Very near to that mind. Very good. विचार. Vichar. अंतरात्मा. That's also very good, sir. Very good. Antaratma. Right? One is the intention, maybe कि what Intention. हमारी सोच क्या है? Intention. Right. These are all through the spiritual energy, vital force. We can put different names. Someone also calls it as soul. Right. Right? The vital energy, vital force, spiritual energy, dynamic energy, soul, number of words can be used for it, but the working principle, the basic refill part is it. Now what we have been doing is we are representing to the pen stage, that is the fully body conscious stage. Number third, ego means minus and minus. जहाँ मैं और मेरा आ जाता है, वहाँ पे ईगो आ जाता है। मैं डॉक्टर हूँ, यदि मेरे इंटेंट में यही विचार था तो मुझे ईगो आ जाएगा कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है। यदि मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ तो मेरे में तो ये ईगो आ गया कि आई एम बीइंग प्राउड इज समथिंग डिफरेंट एंड बीइंग ईगोइस्टिक, जैसे कि बताया सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का लेवल जस्ट वी क्रॉस द मार्जिन ऑफ इट। जब वो क्रॉस हो जाता है, वी नेवर से कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो हम छोड़ दें, बट द थिंग इज इफ वी क्रॉस दैट सुपीरियर स्टेज, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स स्टेज, देन वेयर इट कम्स कि मैं और मेरा, राइट, बॉडी कॉन्शियस अगेन। जब मैं और मेरा आ जाता है, मैं ऐसा ऐसा हूँ, ये मेरा है, देन द ईगो स्टार्ट्स ओवर देयर। नेक्स्ट इज ईगो, पुटिंग इट शॉर्ट is E plus go, that is letting our energy go. जैसे कि स्टार्टिंग में हमने एक एक्सरसाइज किया, माइंड को एक एक्सरसाइज दिया, राइट? उसमें हमने जज किया हमारे थॉट्स कौन से हैं, सभी ने जज किया, राइट? इफ यू हैव एलिवेटेड थॉट्स वी हैव +5 मार्क्स, इफ यू हैव पॉजिटिव थॉट्स जो हमने लिखा +4 मार्क्स, राइट? ऑर्डिनरी थॉट्स जो है इस वो हमारा ग्राफ ऊपर भी नहीं लेके जाएगा, नीचे भी नहीं लेके जाएगा, इट्स अ स्टैंड स्टिल। Waste thoughts minus, negative thoughts again minus. So what does ego does? Ego क्या करता है? तो हमारे thoughts जो है जब ego होता है तो these are the waste and the negative thoughts. It always depletes our energy. It always depletes our energy. Putting it in a sequence form, I always take when K2 health session I take, I always go for a word called team. T-E-A-M, team. How does this team play role, or what is the full form of team? I would like to share with you. T stands for the thoughts. T stands for the thoughts. E for the emotions. A for the attitude, and M for the memories. Thoughts, emotions, attitude, and memory. Right?
when I am ego, how am I letting my energy go? Because my thoughts here become negative. Right? I have stuck to a negative image of myself, wrong image of myself. Right? And when my thoughts are negative, my emotions will also be negative. When my emotions are negative, my attitude would also be negative. And when my attitude is negative, then my memories about those facts would also become. So am I depleting my energy or I am increasing my energy? मैं energy बढ़ा रही हूँ या कम कर रही हूँ? Depleting. Increase कर रही हूँ, right? जहाँ पे मैं और मेरा आएगा, वहाँ पे ego है ही. जब ego है, तो हमारी जो energy है is going on. So do we want to let go our energy? Do we want to waste our energy? Do we want to waste our energy? No. How to increase our energy? That also will be saying in the last. Ego refers to edge, good out, right? Good से हम cross कर चुके हैं, वो edge को हम cross कर चुके हैं. Ego is one of the main vices which we have to overcome to attain the stage of perfection and to experience real peace and happiness. This is very important to know that the vices, when we get in the cobweb of vices, we can say, तब वो स्टेज जो है उसे निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं कहेंगे हम, बट थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ेगा. Putting it very short and very sweet, I want to tell that if you want to have real happiness and peace in our life, then I have to remove ego. Right? Now, the main topic, that is ego management. So where there is attachment, there is resistance. जहाँ पे मुझे अपनी बॉडी से अटैचमेंट है, अपने करियर से अटैचमेंट है, अपने संबंधों से अटैचमेंट है, अपनी फॉल्स आइडेंटिटी के साथ में फॉल्स अटैचमेंट है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा. राइट? आई वोंट बी एबल टू गो फॉरवर्ड. मैं आगे का नहीं सोच पाऊँगा ज़्यादा. मैं रेजिस्ट हो जाऊँगा. जो मैंने सोचा है वो सही है, दूसरों के आउटपुट में एक्सेप्ट नहीं करता. वेयर देयर इज रेजिस्टेंस, देयर इज फियर. राइट? मुझे डर लगने लगता है कि मेरी पोजीशन कोई और ले लेगा, तो कहीं ना कहीं फियर आने लगता है. आई एम नॉट बीइंग ओपन टू ऑल. वेयर देयर इज रेजिस्टेंस, देयर इज फियर. व्हेन आई कन्फ्रंट एनी काइंड ऑफ फियर, देन देयर इज ईगो इन मी. बहुत ही सूक्ष्म बात है, हम शायद परख ले हमारे अंदर कि जब कॉन्स्टेंटली मेरे अंदर फियर आने लगता है, एक डर आने लगता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ईगो है. आई एम कोटिंग माय सेल्फ. फियर इक्वल्स ईगो. मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरा जो पद है, what I am sticking to, right? If I fear that it will go, then there is ego. It's a very subtle form. Now, ego management, we will see the seeds of ego. What are the seeds of ego? Firstly, we have seen that fear, attachment, what we have seen in the cycle. Fear, attachment, and some kind of wrong identification about myself. Right? I have put some wrong identification, just like the pen. हमने पेन को ही समझ लिया था कि हम वही है. हमने हमारे क्वालिफिकेशंस लिखे, हमारा परिचय लिखा, तो हमने क्या लिखा है? पेन पार्ट लिखा है. किसी ने कहा आई एम अ सोल, राइट? किसी ने कहा आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग. हमने सोल को भी अभी अंदर देखा, रिफिल को भी, वर्किंग प्रिंसिपल भी देख लिया, आई एम अ सोल. बट व्हाट टाइप ऑफ सोल आई एम, और व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द सोल? दैट्स आल्सो वेरी गुड इंपॉर्टेंट फैक्टर. Just like the human body, it needs 5 elements. 5 तत्व. Human body, human being is made up of 2 words, right? Humus plus being. Humus जो है 5 तत्वों का बना हुआ पुतला, we can say वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी and नभ. And being part, that is being is represented as present continuous tense, right? Something which is present and going on continuously. So what is making my body work on? The working principle is nothing but soul. Just like the body needs 5 elements for its working, right? Just like the body needs oxygen and air. If you replace the air with nitrogen, will it do? No. If you replace the water with petrol or diesel, will it do? चलेगा? बहुत प्यास लगी और पेट्रोल और डीजल को सामने रख दे तो नहीं. जो ह्यूमन बॉडी को जो तत्वों से बना हुआ है, it demands that. In the same way, the soul, I as a soul, what are those qualities which I need? What are the qualities of the soul that are the points we have to introspect?
reflected in behaviors like, ego is reflected in behaviors like, now I can judge if there is some behavior in me like this, like refusing, accusing, teaching, justifying, arguing, competing, forcing, expecting, avoiding, comparing. Some or the other form, right? If I start comparing myself with others, what is that comparison for? That's also very essential. If that comparison is for my improvement, it's not for in the negative sense, it's okay. But if I start comparing in the form that is to what he is that much equivalent, why haven't I? If I start comparing in this form, then I can do it the best way. Nobody else can do it. Right? Then there is some problem. Right? So I have to find out what is my seed. मेरा seed कहाँ है, मेरा बीज कहाँ है. Then ego management comes, that is consciousness of acquiring things also creating. Somewhere the other, हमारे अंतर्मन में कुछ न कुछ मुझे डिमांड चाहिए, कुछ न कुछ मुझे चाहिए. वो consciousness भी continuously अगर चल रहा है, I want to acquire this and this position, I have to be this, then also it creates ego. Ego of body, possessions, religion, nationality, qualifications, number of ego can be there. I have to find out what type of ego I am having. Right? So making it very simple, हम देखते हैं मंदिर में हम जाते हैं तो क्या करते हैं? What do we do? First of all, before entering the temple, we remove our shoes. Then we do the tilak. और फिर हम नमन करते हैं. Right? मतलब सबसे पहले तो हम जो चमड़ी है, राइट, जब हमें ईगो लेस भी बनना है तो सबसे पहले मुझे अपना बॉडी को, जो बॉडी के जो फॉल्स इमेजेस है उसको छोड़ना पड़ेगा, जो चमड़ी है उसे छोड़ना पड़ेगा. Then I have to put the tilak. Tilak means nothing but what I am, soul consciousness stage. What qualities I possess, right? The soul has 7 qualities, right? Those are knowledge, peace, purity, happiness, bliss, power. Like this, the 7 qualities of the soul are. Love. What quality I as a soul am possessing and how to inculcate it. Right? All these 7 qualities are related to the organ systems of human body. All of these 7 qualities are related to the human body. And I would like to emphasize on one quality today, which is very related to ego management, and that is love. Love, right? It is one of the quality of the soul. What are we doing, friends, today? We are going to the false imprints of others and false imprint about myself. I have started something searching for the bodilessness, or we can say the बाहरी चीजों पर आकर्षण है. बट जब मैं ईगो में हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को दूसरों से अलग समझ रही हूँ. राइट? जब मुझे दूसरों के लिए स्नेह होने लगेगा, जब मुझे दूसरों के लिए स्नेह आने लगेगा, तो आई कैन से कि कहीं ना कहीं फिर मेरा ईगो कम हो सकता है. अगर मुझे दूसरों से प्यार है, अगर छोटा बच्चा, आपका कोई बच्चा है, बेटा है, वो उन्नति करता है तो आपको खुशी होती है ना, उल्टा आप उसको और प्रोत्साहन करते हैं. गुड, यू कैन डू मोर, यू कैन डू मोर. राइट? व्हाई? बिकॉज देयर इज लव अमॉन्ग्स्ट us. In the same way, if I develop love for all the human beings, if they are progressing, I am also happy. And in that stage, friends, even we can progress more and more. Right? Sometimes we have communication gap between us also. We think what we are doing is right and what others are doing is wrong. Does it happen? Does it happen? Does it happen? I can give an example. What do you think this is? इसका कलर क्या है? Black. मैं बोलूँगी इसका कलर येलो और ब्लैक है. कौन सही है? आप सही है? आप सही है? Right? You are right. Right? I am wrong. Right? Now if I say now है येलोइश. हम लोग जो है हमारी हैबिट हो चुकी है, जो नजरिया मुझे दिख रहा है, जो मैं देख रहा हूँ वही सही है. Okay? पर हमने कभी दूसरों के एंगल से सोचा ही नहीं. Empathy. Can say it, putting in one word, empathy. Have I tried myself putting in others' shoes and see and think what does he feel, what does he think, what's his opinion, right?
कहीं ना कहीं जो मिसकम्युनिकेशन गैप आ जाता है ईगो में, वो हो जाता है मिसकम्युनिकेशन की वजह से, डिफरेंस इन ओपिनियन, बट वी नेवर टू फाइंड आउट द अदर वे आउट, राइट? Now what can be the types of the ego we can say? Now we can also judge one thing. Ego of personality and beauty. What personality I possess is just the fit and fine. So I am very can say I am very superior from others. Ego of qualifications. I am a very well qualified person. ये जब मन में आने लगता है विचार, तो भी कहीं ना कहीं ईगो आने लगता है। मेरा designation or position, it's a very good designation. I am the CEO of the company. I am the boss of the company, right? When this designation, okay, it's a fact. But when it crosses my level, कहा जाता है सक्सेस जो है मिला लिया बहुत अच्छा है, but we also should know to digest the success. Right? If I am not able to digest the success, then there is ego. Right? Ego of designation or position. Ego of the wealth, having a good wealth. Ego of my family name. I can also have ego for it that I am belonging to a very good family. Ego of intellect. मेरी बुद्धि तो बहुत sharp है. Very intellectual person. There is also ego for it. Again, ego of property. What property do I possess? I am egoistic about it. Ego of relatives occupying high position. होता है काफ़ी जगह पर, मुझे याद है कुछ समय पहले एक व्यक्ति मिले, उन्होंने मुझे कहा कि आपको कुछ भी काम हो ना मुझे बोलना, मैं कर दूँगा। मेरा फ्रेंड जो है ना, ही इज द चीफ मिनिस्टर, तो आपका कोई भी काम होगा मैं कर दूँगा। वो सो वेरी इगोइस्टिक फॉर द पर्सन्स पोजिशन, वी कैन से। इन द सेम वे, whether I am becoming egoistic for my relatives, their positions, ego of my own specialties. In the first session itself, जब first minute हमने लिखा, I have wrote down, हमने लिखा है, right? Some qualities हमारी क्या है? Even if I become egoistic for those qualities, then also it's harmful. I should know those qualities, friends. It's a very big difference, you know. I should know those qualities which I possess so that I can make development for it. But I should not be egoistic for those qualities. Because where the ego comes, there is the depletion of knowledge. Right? इसलिए जब याद आता है मुझे, स्वामी विवेकानंद जी भी जब एक बार आउट ऑफ इंडिया गए थे, तो उन्हें बताया गया कि आपकी गीता जो है वो तो सबसे नीचे रखी हुई है, बाकी धर्म ग्रंथ सबसे ऊपर है, आपकी गीता का क्या लेवल है, एकदम नीचे है। एनीबडी वुड हैव, वहाँ पे सभी को एंगर आ सकता था, ईगो आ सकता था कि हमारी गीता को कैसे नीचे रखा। बट व्हाट डिड ही डू? Gita is the base of all the country. It's a strong base. Yeah? It's a strong base. It's a strong base. How did he prove it, you know? सबका आधार गीता है, मतलब इसके पे सब धार्मिक ग्रंथ। How did he prove, you know? उन्होंने नीचे धीरे से से हटा वहाँ पे गए, वो गीता को नीचे जो थी उसको खींचा बाहर, सारी की सारी बुक्स गिर गई। said without the base, without the foundation pillar, without the foundation, the building can't be stand still. जो बेस है बोला वही नहीं रहा, तो फिर कैसे क्या आगे का? So he was not egoistic for it. Right? Even further, when people told him, आपकी वेशभूषा तो कितनी सिंपल है, इंडियंस ऐसे होते हैं. What did he comment for it? उन्होंने बहुत ही सुंदर अक्षरों में कहा कि हो सकता है कि आपके देश में लोगों की पहचान कपड़ों से होती हो सकता है आपके देश में लोगों की पहचान कपड़ों से होती हो, परंतु हमारे भारत में तो लोगों की पहचान चरित्र से होती है। And we belong to a nation, friends, where character is the main thing. I remember one thing in British Parliament in 1835. There was one conference, and Lord Macaulay. Have you heard of his name? Lord Macaulay. Have you heard? He was a very good intellectual person, और उन्होंने काफ़ी सारे लॉज लिखे हैं इंडिया में, और उस टाइम पे 19th सेंचुरी में जो लॉज लिखे थे उन्होंने इंडिया के लिए, बिकॉज दैट टाइम जब लॉ हमारा आया तो ब्रिटिश बेस ही है ना,
the first law that is Indian Contract Act वगैरह सारा ब्रिटिश बेस्ड है हमारा, राइट? और अभी तक उसमें अमेंडमेंट्स ज़्यादा नहीं हुए हैं। यू नो व्हाई? उन्होंने इतना इंटेलेक्चुअली लिखा था कि अभी तक उसमें चेंजेस नहीं हुए। इतना माना वो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। एंड इन दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1835 ही हैड रोट, उन्होंने लिखा, एक पेपर में भी उसका आया है, उन्होंने लिखा कि इंडिया जो है बहुत ही स्पिरिचुअल बैकबोन के साथ में, और इंडिया को अगर हराना है तो ये स्पिरिचुअल बैकबोन हटाना बहुत ज़रूरी है। यदि ये स्पिरिचुअल बैकबोन नहीं हटेगा तो इंडिया को हम हरा नहीं सकते। एंड दैट्स व्हाट दे डिड, दैट्स व्हाट दे डिड। टुडे वी आर सफरिंग बिकॉज वी हैव लॉस्ट स्पिरिचुअलिटी इन सम ऑफ द फॉर्म्स। वी बिलीव दैट स्पिरिचुअलिटी तो बड़े लोगों के लिए है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है बुजुर्ग लोगों के लिए है, ऐसा होता है। एक कल मेरे पास एक छोटा बच्चा 10th स्टैंडर्ड का आया, उसकी मम्मी बोलती है वो तो सोचता है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ बड़ों के लिए है। देन आई सेड कि नहीं पापा, ये तो आपको की टू सक्सेस भी देगा, राइट? बिकॉज आई हैव बीन रियली अटैच्ड विद इट सिंस चाइल्डहुड। आई हैव सीन दैट कहीं हर एक लाइफ के हर एक मोड पे वो ज़रूरी काम आता है, ज़रूर ही काम आता है, राइट? सो लॉर्ड मैक्यूले उन दिनों में उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही निकला। What he self-introspected, it was very right, he was very intellectual person, and really they won because of that. And again we saw Mahatma Gandhi ne bhi, how did he won again? With spirituality. Right? So ego of my own specialities, this is also very harmful. Again ego of knowledge. This is the ignorance, you know. हमको नॉलेज आता है तो हमें लगता है हम बहुत कुछ जान चुके हैं, और ये इग्नोरेंस है कि हम ईगो में जा रहे हैं। And ego of achievements, of course. Whatsoever I am achieving, I should be happy with it, but not egoistic with it. होता है अगर मुझे ईगो आने लगा, if I become egoistic, then मैं वापस से वहाँ पे stagnant हो जाऊँगी. My river won't be flowing. Starting में ही देखा, the next I should keep on flowing. Right? So many other egos are there, right? You can find out where am I. What are the symptoms of an egoistic? Egoistic person is always eager to listen his own appreciation. Now let me find out. Am I eager to accept, or am I eager to listen my appreciation? मैं कुछ काम करता हूँ तो लोग तारीफ करते हैं या नहीं, उसके ऊपर मेरा काम डिपेंडेंट है। अगर किसी ने तारीफ किया तो अच्छा लगता है, और नहीं किया तो मायूस हो जाते हैं। I can introspect. Second, always praising himself and boosting his specialties and achievements. मैं हमेशा मेरे अपने आप को प्रेस करते रहता हूँ, बूस्ट करते रहता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। Nobody can do this work as well as I do. Right? The only aim behind each task of an egoist is the attainment of name and fame. मुझे मेरा नाम और फेम जो है उस पर मैं पूरी तरह से अटैच हो चुका हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उसमें अटैचमेंट आ चुका है, then it's injurious. He always tries to grabs the rights and chances of others. Right? Egoist person will always try to grab the rights and chances of the others. वो कर सकता है तो मैं भी करूँगा. It's not with the thinking that I can do it better, or I can also try doing, or I want to learn something. Not with that attitude, but with the attitude of comparison. If it is done, then it is somewhere or the other ego. He never accepts his mistakes if they are pointed out by others. Right? I should always be down to earth because I know I am not perfect. Even today I am learning from you something or the other. I am always ready to learn from others. This is the thing which a normal person can do. But if I become egoistic, if somebody tells me some correction, I have write down, I will see you have a letter or one paper on it for feedback. You are always free. If there are suggestions to give me so that I can improve more, I can become more good for what I am doing. So I am always there. If I am always there, except I may be lacking in something, I have to try the best. So that is where when we can avoid the ego. An egoist can't tolerate any disgrace. Right? अगर किसी ने उसके बारे में कुछ कह दिया तो he won't tolerate the disgrace. Always likes to speak rather than listen. कहना ज़्यादा अच्छा लगता है, सुनने की कैपेसिटी नहीं है।
कोई सुनाएगा तो कैपेसिटी नहीं है. He would quote his examples more and try to prove himself to be right even when he is not. तो मैं हमेशा अपने आप को राइट प्रूव करते रहूँगी कि मैं राइट हूँ, सामने वाला रॉन्ग है, बट नेवर इंट्रोस्पेक्टेड, नेवर टुक अदर्स ओपिनियंस ऑल्सो. देन कहीं ना कहीं मुझ में ईगो आ गया. What I am thinking is right and everyone should act according to my thinking is the great symptom of ego, I can say. Never likes to listen others' appreciation. He never appreciates his subordinates, elders or equals. Hence it's very essential that we try to appreciate others. I remember the incidents of our late honorable, we can say, our good and honorable past, we can say, Mr. APJ Abdul Kalam ji. When he was just entering in his defense fields and research development organization, I remember one of his very good example what he had given. He had done the research and with his boss, and he took his some outputs from his boss that whether I should do the research in this way. मैं ये research ऐसे कर रहा हूँ या मैं ऐसे ही carry on करूँ. तो उनके बॉस ने उन्हें कहा नहीं ऐसे मत करना, ये तरीके से करोगे तो सक्सीड नहीं होगे, आप इस तरीके से करो तो सक्सीड हो सकेंगे. एंड मिस्टर अब्दुल कलाम थॉट मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ, माइट बी आई विल सक्सीड, इनके तरीके से शायद मैं सक्सीड नहीं कर पाऊँ. एंड ही ट्राइड हिज ओन वे. उन्होंने उनके तरीके से ट्राई किया वो रिसर्च. जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, व्हेन द प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड, the result was that the research was not successful. Research successful नहीं था. And when the boss was asked, when his sir was asked कि why was the research not successful, his sir, Abdul Kalam sir, he said somewhere or the other I had a lacuna. कहीं ना कहीं मैं गलत हो चुका हूँ, इसलिए रिसर्च नहीं हो पाया बराबर से, हम अगली टाइम इसे सुधार कर करेंगे. Okay, that was the pause. The next story goes on like this. तब अब्दुल कलाम जी को एहसास हुआ जो कि मुझे सर ने बोला था वो सही था. अगर मैं उस ढंग से करता, वो चेंजेस से करता तो रिसर्च वुड हैव बीन सक्सेसफुल. और उन्होंने उसी ढंग से वो रिसर्च किया जैसा सर ने बोला था. एंड द नेक्स्ट टाइम द प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हेन इट वाज कॉल्ड, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला द रिसर्च वाज अ वेरी वेरी ग्रेट सक्सेस. और जब उनके जो सर थे उनसे पूछा गया हाउ कम द रिसर्च वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल राइट नाउ. उनके सर ने कहा कि जो उनकी टीम है इट वाज लीडेड बाय मिस्टर अब्दुल कलाम जी एंड इट वाज हिज एफर्ट्स दैट द रिसर्च वाज सक्सेसफुल. कुछ डिफरेंस लगा इसमें. यदि जो सर है वो पहले ही बोल देते कि इनकी गलती थी, इनकी वजह से नहीं हो पाया, दैट वुड हैव बीन समथिंग इगोइस्टिक ऑफ एटीट्यूड, बट ही वाज नॉट विद दैट. ही हैड अ वेरी वेरी गुड टीम अप्रोच. दूसरों को आगे उठाना. फ्रेंड्स सुनो, हम किसी को मान दें या न दें, परंतु उनकी बात जरूर, आई कैन से पुट इट इन वन वर्ड्स, हम किसी की बात माने या न माने लेकिन उनको मान जरूर दें. मानते हैं नहीं मानते हैं परंतु मान जरूर दें. बॉस ने वही किया, उन्होंने गलत किया तो ही डिडंट गो विद इट, ठीक है, मान जरूर दिया उन्होंने. आज मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं इस वजह से हो रहे हैं. हम चाहते हैं हमें सम्मान मिले, बट आर वी गिविंग, आर वी रिस्पेक्टिंग अदर्स? जो मुझे चाहिए क्या मैं उसी एंगल से सभी को देता हूँ? एंड द थिंग इज वाइस वर्सा. एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट. जैसा मैं करता हूँ मुझे उसका आउटपुट मिलता है. मैं यदि दूसरों को मान नहीं दे पाता हूँ तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट इट? कहीं ना कहीं आई हैव टू फाइंड आउट. एन इगोइस्टिक यूजुअली हैज स्टबर्ननेस, अब्यूजेस अथॉरिटी. कहीं ना कहीं उसमें स्टबर्ननेस है, अथॉरिटी अब्यूज करता है, अपसेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है इजीली. राइट? नेवर गिव्स हैप्पीनेस टू एनीवन. कभी भी हैप्पीनेस नहीं दे पाता है, डाउन टू अर्थ नहीं हो सकता है. इसलिए इवन विथ स्मॉल अटेनमेंट्स हैज अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. छोटी छोटी अटेनमेंट्स भी होंगी ना तो भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. अरे वाह, ये तो मैंने से बहुत अच्छा किया. एक छोटा सा हम ह्यूमरस वीडियो देखेंगे. इट इज नथिंग टू डू विद ईगो, बट जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट वी विल हैव अ स्मॉल वीडियो.
Right? So if I find some time to give happiness to others, create some time to create some humor, the life would be more fantastic. If I start giving others, I will also be happy. And one more thing for happiness is, the basic rule is, अगर मेरे पास है, I'm sorry, I'm going more in English, हिंदी, अगर मेरे पास खुशी है तो मैं दूसरों को दे सकूँगा ज़्यादा. यदि मेरे पास खुशी नहीं है तो मैं कैसे दूँगा? Taking an example, if I ask you, sir, can you please give me a pen? You can give, right? Because you have. Right? If I say you, can you please give me a marker? Can you give me right now? Don't have, so you won't be able to give. अगर मेरे पास खुशी नहीं है तो मैं दूसरों को कैसे दूँगा? पहले मुझे अपने अंदर लानी पड़ेगी ना. वो कहाँ से लाऊँ मैं? कुछ तरीका है उसके लिए, कुछ उसके लिए फॉर्मूला है. आज हम वो फॉर्मूला देखते जाएंगे कि कैसे खुशी मिलना है द लास्ट. Now some harmful effects. Harmful effects. A person who has ego will always feel insulted. अगर मुझ में ईगो है तो मैं हमेशा अपने आप को इंसल्टेड. कुछ भी मुझे किसी ने बोल दिया तो मुझे इंसल्ट फील होगा. हम लोग कहते हैं आपको कुछ कहना है तो मुझे तो चार लोग को अकेले कह दो चल जाएगा. कहीं ना कहीं मुझ में थोड़ा सा है परसेंटेज. If it hurts, it is ego. यदि किसी ने कुछ कह दिया मुझे unnecessarily और मुझे हर्ट होते रहता है, when I'm very sensitive for it, तो कहीं ना कहीं मेरा अटैचमेंट जो है रिफिल पार्ट से हटकर पेन पार्ट में पहुंच चुका है. Right? Is a talkative person, this decreases in inner powers. How much we are talkative, जितना हम talkative है, I'm not getting the time to self-introspect myself. So I'm depleting my energy. मेरा एनर्जी लेवल कम होते जा रहा है. Never gets concentrated. He feels that he is the master of all. This feeling doesn't allow him to realize the truth. यदि मैं सोचता हूँ मैं मास्टर हूँ हर एक चीज का, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकूँगा. Friends, I have one friend called Jessica Cox, and she doesn't have hands. उनको हाथ नहीं है. Have you heard of her? Yes, yes. Everybody?
सबने सुना है उसका जेसिका फॉक्स का? मैं आपको उनका एक छोटा सा वीडियो बताती हूँ क्योंकि मेरे में और उन्होंने एक कॉमन चीज़ है. Plain शी चला इज ऑल्सो ब्लैक बेल्ट इन ताइक्वांडो. Jessica Cox is the nation's first and only licensed pilot who has no arms. She is a licensed private और आर्म्स नहीं है. Jessica was born without arms, but she can do almost everything with just her feet. From putting in her contacts to texting her friends on her cell phone.